Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 2nd, that is Introduction to DBMS. In last lecture, we have seen advantages of DBMS as well as we have also seen data types which are used in DBMS. Today we are going to study some new things in DBMS. So let's begin. Today we are going to study data model, relational data model, and lastly we are going to see properties of transaction. Let us see one by one. First thing today what we are going to study is data model. Now what is the meaning of data and model? Model means what? Any structure, or we can say the design. Okay, so that is called as what? Model. So how this data is arranged or designed, that is known as data model. So how we are going to arrange that data, in which structure we are going to place that data, that will be called as data model. So let us see the definition of data model. A database model defines the logical design and structure of a database and defines how data will be stored, accessed and updated in a database management system. While the relational model is the most widely used database model. Now what this says? So what I have already told you, what is data model? It is nothing but the design or the structure in which the data will be arranged. So data model, database model, it is defining the logical design. So there will be some logic behind that design. Okay, जो भी design रहेगा उसके पीछे कोई logic रखा रहेगा. जैसे कि किस रो में relation होना चाहिए, या किस network में होना चाहिए, या फिर किससे किसका डेटा डिराइव किया है. So there are different models, so there will be some logic behind that. So defines the logical design and structure of a database and defines how data will be. So और वो क्या बताता है कि डेटा किस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं, डेटा किस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए. एक्सेस मीन्स वॉट एवर डेटा यू वॉन्ट, हाउ यू कैन एक्सेस इट. हमको अगर कोई डेटा देखना है तो उसको किस तरह से हम लोग देख सकते हैं. एंड अपडेट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू अपडेट एनी डेटा देन दैट हाउ दैट यू कैन अपडेट इट इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज करते हो, जैसे कि हम लोग ने देखा था MS Access, SQL Server, Oracle, these are the different database management software. So इसमें से जो भी database management system में आप database बनाओगे, उसके अंदर आप जो भी data लिख रहे हो या फिर arrange कर रहे हो, वो किस format में है उसका study हम लोग करते हैं. Okay, and that design, the way which how we are arranging the data, that design and that type of a structure of a database, that will be called as what? Data model. Okay, and from also it is also going to tell you how the data should be stored. Means data किस तरह से store करना है, फिर किस तरह से हम लोग access कर सकते हैं and किस तरह से हम लोग update कर सकते हैं. For example, in MS Access में हम लोग जो भी data store करते हैं वो in the form of table होता है. Okay, जो भी data हम लोग store करते हैं वो किस form में होता है? Table के form में store करते हैं. Okay, so while the relational model is the most widely used database model, so there are different types of database model, or you can say data model. बहुत सारे database model होते हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा मॉडल है? रिलेशनल मॉडल. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल. यू कैन से नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और hierarchical model database model is there, relational database model is there, but from that सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है relational model. That's why in this chapter we are going to study about the relational model. So I hope this is clear to you what this says actually. Data model क्या होता है कि डेटा किस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड,
accessed means data किस तरह से store करना है, किस तरह से access कर सकते हैं and updated in a database management system. So this is a definition of database model, and there are different types of database model. From that, the most widely used is which one? Relational model. Okay, now let us see what is relational model. Next thing which we are going to study is relational model. Relational model means in database model how we are relating one table or one data with another, that is called as relational model. So there will be many tables in your database, and how one table is related to another table, that relationship is called as relational model. Right? Now see, it is the most popular data model in DBMS. So सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल कौन सा है DBMS में? Relational model. It is the most popular, means famous. Okay, then relational model is the primary data model which is widely used for data processing. So relational model, it is a primary, सबसे first data model है और it is a primary one, and this is widely used for data processing. For processing the data, the model which is widely used is relational model. So it is popular data model as well as it is primary data model as well as it is widely used data model. So which data model is widely used, which data model is most popular, which data model is primary? You should know the answer. The answer is relational model. Okay, then lastly we can say that this model has all the properties required to process data with storage efficiency. So whatever the properties are required for processing the data, जो भी data processing के लिए need होता है, जो भी properties required होते हैं, वो सब ये model fulfill करेगा. ओके, ये जो रिलेशनल मॉडल है ये सब प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है जो एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगने वाला होता है. With storage efficiency, what is the meaning of storage efficiency? Means it is having enough storage. Okay, storage space is available. So with storage efficiency means it is more sufficient enough for storing the data. Okay, this model, that's why with storage efficiency. Okay, so what you can say, it is a most popular data model, it is a primary data model, it is most widely data model which is used for data processing, as well as whatever the properties are required for processing the data, that is also given by this model, as well as it is having the storage efficiency. Okay, so these are the 3 points which are for relational data model. Okay, now let's move further and see some properties used for the transactions purpose. Okay. So the last part of today's lecture is nothing but properties of transactions. So whenever you're doing any transaction, so which properties it should follow, that we are going to study. And this is very important in case of DBMS. So what is transaction actually? A transaction is a very small unit of a program and it may contain several low-level tasks. So it is nothing. What is transaction? It is nothing but a small unit of a program. So when you are transferring any money from one place to another or from one account to another, that is what? That is one type of a transaction. So, and what happens for this? This may take some several low-level tasks. So it is having some task. Okay. So whatever transaction you are doing, that time you perform some task. Okay. That is, network should be there. The account number should be correct, right? So all these are what? Some type of a task we can say, or we are going to study the properties of transaction in which that transaction should follow all that properties. A transaction in a database system must maintain. So see, this is very important. Whatever transaction you are doing in a database system, they should maintain what? Atomicity, consistency, isolation and durability. Commonly this is known as ACID properties. Which properties?
acid properties. A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. Okay, so these are the four properties which any transaction in the database system they should follow in order to ensure, so that if you're following these four properties, you will get accuracy, your data will be accurate, completeness, and data integrity. Your data will be what? It will be accurate, it will be complete, as well as honest or the correct data. Data integrity means what? Honest, or it should be correct. Okay, so if you are following these four properties, that is atomicity, consistency, isolation, and durability, then you are surely going to get accurate data, complete data, and which data? Correct data. Okay, so let us study these properties one by one in detail, that is atomicity, consistency, isolation, and durability. So this four properties, in short, they are called as which properties? Acid properties. This is also very important. So let us see first one, that is atomicity. So the first property which we are going to see is what? Atomicity. Okay, so what this atomicity means? It ensures that all operations within the work unit are completed successfully. Otherwise, the transaction is aborted at the point of failure and all the previous operations are rolled back to their former state. What this says? See, this means whatever the operations you are performing in the work, okay, whatever work you're doing, whatever transactions you're doing, that should be complete. ओके वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए. अगर वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हो जाता है? ट्रांजैक्शन गेट्स अबॉर्टेड, मींस इट गेट फेल्ड. जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे वो फेल हो जाएगा और पूरा रोल बैक होके फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा. Okay, for example, I would like to explain it in the form of transferring the funds from, or we can say money from one account to another account. Okay, so for example, what I can say, अगर suppose आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, यू आर ट्रांसफरिंग मनी. ओके, एंड अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है मनी, तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी सेट क्या इंश्योर करता है कि पूरा डेटा या पूरा जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा डेबिट, इफ डेबिट इज मेड सक्सेसफुली फ्रॉम वन अकाउंट, देन व्हाट शुड हैपन? उसी तरह से दूसरे अकाउंट में क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. अगर आपके अकाउंट से डेबिट हुआ तो दूसरे अकाउंट में क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. So this should be complete. That is why it is called as a atomicity. Okay, अगर आपके अकाउंट से डेबिट हुआ और उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. ओके, सो दैट इज अबॉर्टिंग द ट्रांजैक्शन. सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करते समय ही लास्ट स्टेज में जाके पूरा अकाउंट नंबर वगैरह सब डाला किसको पैसा देने का है, लास्ट मोमेंट में जाके नेटवर्क का इश्यू रहेगा तो आपका मनी ट्रांसफर नहीं होता है, एंड अगेन यू कम टू द फर्स्ट स्टेट. या फिर आप पिन भूल जाते हो तो क्या हो जाता है? पासवर्ड भूल जाते हो तो दैट टाइम ऑल्सो एवरीथिंग इज रोल्ड बैक एंड अगेन यू कम टू द फर्स्ट स्टेज. Okay, so that is what, so atomicity means what? Whatever the transactions you are doing, that should be complete. Okay, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए. तो इसमें मैंने क्या एग्जांपल बताया? फ्रॉम वन अकाउंट, इफ द मनी इज ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, दैट टाइम इफ योर अकाउंट इज गेटेड डेबिटेड, देन द अनदर वंस अकाउंट शुड गेट व्हाट? क्रेडिटेड. यहाँ से पैसा भेजा तो उसको पैसा मिलना भी चाहिए. ओके, so that is the first property. Now let us see the another property, that is, what is the second one? Consistency. Consistency, it ensures that the database properly changes states upon a successful completed transaction. So consistency means your data should be consistent. Okay, so it ensures that the database properly changes the states. Now what this means? This what it is saying, that whenever you're doing the transaction from one end to the another end, that time whatever the transfer you're doing from one account to another account, that time the total value of funds, whatever money you're transferring, that should be same in both the account.
ओके, दोनों के एंड में सेम पैसा जाना चाहिए। आपने यहाँ से अगर 1000 रुपीज भेजा है दूसरे अकाउंट पर या दूसरे को, तो उसको 1000 ही मिलना चाहिए, उसको 500, 900 या 2000 नहीं मिलना चाहिए। What, so that should be same, that should be equal, right? So that is called as consistency. So data should be consistent. Okay, so it should be whatever you're transferring from here. So it ensures that the database properly changes states upon a successfully completed transaction. So यहाँ से जो ट्रांजैक्शन दूसरी तरफ, यानी यहाँ से अगर मैंने डेटा किसी और को भेजा है, तो जो डेटा मैंने भेजा है वही डेटा दूसरे को जाना चाहिए। एक्स्ट्रा डेटा या डिलीटेड डेटा नहीं जाना चाहिए। जो डेटा मैंने भेजा, अगर मैंने यहाँ अपने कॉलेज में से सिर्फ 12th ई का या 11th ई का ही डेटा भेजा है, तो उसको सामने वाले को कौन सा डेटा मिलना चाहिए, 12th ई या फिर 11th ई का जो मैंने भेजा रहेगा, उसको दूसरे डिवीजन का डेटा मिलना चाहिए क्या, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंसिस्टेंसी। Okay, now let us see the next property, that is the isolation property. What isolation property states? It enables transactions to operate independently of and transparent to each other. So isolation itself says isolated. It should be isolated. Okay, so transactions to operate independently. Transaction जो भी हो रहा है वो independently होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, and that should be transparent. ओके, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। बस यहाँ से जो भेज रहे हैं वो दूसरे को मिल रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि इसने इतना भेजा है और मुझे वो ही मिला है। ओके, दैट इज ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। So the isolation property ensures that another transaction sees the whatever the transferred data या फिर जो भी मनी आप ट्रांसफर कर रहे हैं in one account or the another, it should be same. Okay, दोनों केस में एक तो यहाँ से जो भी डेटा हम लोग ने दूसरी तरफ भेजा है, that should be viewed, or that should be means that the another person should know, okay, that whatever the data or the transaction has been done, that is from one account or the another, that should be, or in both the accounts, that should be what, same. Okay, so that is called as isolation property. Means here the another person or whatever the another wherever you're transferring the money, they should see that it should be transparent, means what, they should know that. Okay, so it should be visible to that person also, that whatever you are going to show that, say you share the receipt whenever you're sending the bill, or whenever you're paying anything, that time it should be transparent, means that the person to whom you're sending the money, they should see it. Okay, so जो भेजा है वो उसको दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग receipt को share करते हैं. So that is called as what, isolation property. Okay, so the last thing which we are going to study is durability. Now what is durability? It ensures that the result or effect of a committed transaction persists in case of a system failure. So the result or effect of committed transaction, जो भी transaction किया है वो complete है और उसका result मिलना चाहिए even if the system fails. अगर पूरा transaction हुआ है, transaction होने के बाद में वो complete और committed होना चाहिए. Means whatever the transaction has been done, that should be not undone, यानी वो change नहीं होना चाहिए even if the system fails. ओके, जैसे कि हम लोग ने मनी ट्रांसफर किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी ट्रांसफर करने के बाद सिस्टम फेल हो गया तो सामने वाले को पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेबिलिटी. तो इतना ध्यान, ये प्रॉपर्टीज जो है, ये ड्यूरेबिलिटी जो है, ये इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रांजेक्शन के टाइम पे अगर यहाँ से पूरा पैसा एक तरफ से अगर पूरा डेटा गया है, तो दूसरे को सिस्टम फेल होने के बाद भी वो डेटा मिलना चाहिए. ओके, दैट care should be taken by the durability property. वो take care कौन करते हैं, durability. Okay, so durability means what, whatever the data you are transferring from one place to another place, then even if the system fails, then also that transaction should be seen, or that effect should be seen in the another's data also. Means यहाँ से अगर भेजा है तो उसको वो मिलना चाहिए, अगर ट्रांजेक्शन सिस्टम फेल भी होता है तो भी वो रिजल्ट या वो जो भी डेटा आपने भेजा वो सामने वाले को मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेबिलिटी. ओके, सो now so I hope this all four properties are clear to you. Again I will explain you. See, atomicity. So instead of
whatever is written, I will just explain you. Atomicity means क्या होता है? Atomicity means what I told you कि whatever the transactions, आप जो भी transaction कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो या मनी ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. नाउ टेक द केस ऑफ मनी, टेक द केस ऑफ डेटा, एनीथिंग यू कैन टेक प्लेस. ओके, मीन्स आपको जो भी ट्रांसफर करना है उसको आप रख के आप बात कर सकते हो कि एटोमिसिटी मीन्स क्या. एटोमिसिटी क्या काम करता है? वो क्या काम करता है कि जो भी डेटा हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे हैं, वो मीन्स दोनों तरफ, यहां से अगर भेजा है तो वो डेटा वहां पे जाना चाहिए. मीन्स इफ अकाउंट में अगर आप मनी ट्रांसफर करें तो अगर जितना अमाउंट आपके डेबिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट भी होना चाहिए. ओके, इफ इट इज डेबिटेड फ्रॉम योर देन दैट शुड बी क्रेडिटेड इन द अदर पर्सन्स अकाउंट. सो सिमिलरली डेटा यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो वो डेटा उसके पास रिसीव, यहाँ से आपने सेंड किया तो उसको वो डेटा रिसीव होना चाहिए. दैट कैन बी टेकन बाय एटोमिसिटी. एटोमिसिटी मीन्स if you're sending the data from one place to another place, if the data is sent, then the another person should receive that data. Similarly, if the money is transferred, then if one account is debited, then the another account should be get credited. That is the meaning of atomicity. And what about consistency? Consistency means what? Whatever the value or whatever the data you are sending. यहाँ पे हम लोग ने ये देखा, यहाँ से सेंड किया तो उसको रिसीव होना चाहिए. ओके, एटोमिसिटी में एक तरफ से सेंड किया तो दूसरे को रिसीव होना चाहिए. कंसिस्टेंसी में क्या होना चाहिए कि डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, प्रॉपर. जो भी डेटा एक अकाउंट से भेजा गया है वही डेटा दूसरे अकाउंट को मिलना चाहिए, कोई और डेटा नहीं मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी. ओके, द डेटा शुड नॉट गेट चेंज्ड. व्हाटएवर डेटा यू आर सेंडिंग, दैट ओनली डेटा अनदर पर्सन शुड रिसीव. ओके, सेम डेटा. या फिर जो भी मनी आपने ट्रांसफर किया, आपने अगर 1000 ट्रांसफर किया तो उसके अकाउंट में कितना आना चाहिए? 1000 ही आना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी. Then what is isolation? Isolation means what? It should be transparent. तो जो भी आप कर रहे हो, आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो from one place to another place, then that should be visible. Okay, that should be what you can say, it should be transparent. Means that another person should know it कि ये डेटा वो ट्रांसफर कर रहा है. Okay, so it should be transparent. That is called as a isolation. It should be independent, it should be transparent. Means the receiver should know what data has been sent by the सेंडर. ओके, तो दोनों को पता होना चाहिए, रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि क्या डेटा सेंड किया है और सेंडर को भी पता होना चाहिए कि क्या डेटा रिसीव हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपेरेंट. देन ड्यूरेबिलिटी. एट लास्ट व्हाट वी कैन से, व्हाट एवर डेटा, जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो या जो भी मनी आप ट्रांसफर कर रहे हो, सो वो जो पूरा रिजल्ट मीन्स अगर ट्रांसफर पूरा हो गया है तो क्या होना चाहिए? सिस्टम फेल भी हो जाएगा तो भी दूसरे की तरफ, दूसरे अकाउंट में वो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए या फिर अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए. सी, दिस एंश्योर्स द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ कमिटेड ट्रांजैक्शन. एक बार अगर ट्रांजैक्शन कमिट हुआ है मीन्स कंप्लीट हुआ है तो दूसरे को मिलना ही चाहिए, इवन इफ योर सिस्टम फेल्स. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल पहले ही होता है then that is a case of atomicity. Okay, अगर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, बीच में ही स्टॉप हो गया, तो that is the case of atomicity, क्योंकि वो फिर पूरा अंडन रोल बैक हो जाएगा, मीन्स पहले स्टेट में आ जाएगा. लेकिन ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है कि एक बार अगर आपका पूरा ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, मीन्स आपको अगर आपने अगर मनी सेंड किया, पैसा सेंड किया और आपको मैसेज आ रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, सो व्हाट विल हैपन नेचुरली, और आपके इसमें से पैसे कट हो गए तो नेचुरली दूसरे इसको बाद में आपका सिस्टम फेल हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मोबाइल खराब हो गया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा. नहीं, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था, कमिटेड हुआ था, तो दूसरे पर्सन को वो मिलना ही चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी. ओके, सो दिस फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज डेटाबेस सिस्टम फॉलो करता है तो क्या होता है? आपको क्या मिलेगा? आपका जो भी डेटा रहेगा वो एक्यूरेट होता है, फिर वो कंप्लीट भी रहेगा और क्या रहेगा? कंप्लीट और करेक्ट. ओके, सो if we are following these properties, if any database is following these properties, then your data will be accurate, complete, and we can say it is a correct data, or you can say data integrity. Okay, so this is very important, so you should remember this asset properties. Okay, now this is all for today. Okay, so we have completed what today we have seen. What is data model, what is relational model, and lastly we have seen properties of transactions.
So this is all for today. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.